नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ब्रह्मोस मिसाइल्स के जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बढ़ रहे हैं, मतलब जो ज़बरदस्त तरीके से केपेक्स हो रहा है ब्रह्मोस के ना प्रोडक्शन में, द कंपनीज विच आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट और द कंपनीज विच वुड इन फ्यूचर बेनिफिट द मोस्ट आउट ऑफ इट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो ब्रह्मोस इज इमर्जिंग एज द बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, राइट? तो देर आर कंट्रीज क्यूइंग अप टू बाय ब्रह्मोस. तो एक तो वियतनाम के साथ डील जो है ऑलमोस्ट क्लोजर पे आई है. दीज आर प्रिडोमिनेटली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, प्लस जो वो टर्की को चेक इन मेट करने के लिए आर्मेनिया एंड ग्रीस के साथ भी ब्रह्मोस के नेगोशिएशंस चल रहे हैं. एंड देयर इज ब्राज़ील एज वेल विच इज़ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, वन ऑफ द ब्रिक्स कंट्री विच वांट्स टू बाय दिस वेपन. तो ब्रह्मोस के जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं. देयर आर कंपनीज विच आर benefiting or which are going to get, which have already benefited from it, but in future as well they're going to get benefited out of whatever exports are happening on the Brahmos side, right? तो वो कंपनीज तो हम डिस्कस करेंगे, उनके एक तरह से मैं लिस्ट दूंगा, बट देयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज अ बिट लार्जर. तो अगर आपको याद होगा, कपल ऑफ वीक्स बैक आई हैड मेड दिस वीडियो ऑन डिफेंस इटसेल्फ. तो मैंने उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया. द नेम ऑफ द वीडियो वाज इंडियाज़ न्यूक्लियर सबमरीन्स, राइट? तो उसमें मैंने एक मैट्रिक्स प्रोवाइड किया था कि इफ़ यू हैव डिफेंस कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो और इफ़ यू वांट टू add defense companies to your portfolio, then you follow a matrix. For example, army, नेवी, एयरफोर्स, इसमें आप डिवाइड कर लीजिए. देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर द कंपनी यू टॉकिंग अबाउट इज़ अ मटीरियल्स कंपनी, की मटीरियल्स जो स्टील होता है, अलॉयज़ होते हैं, एल्यूमिनियम वो सप्लाई करती है, और इट्स अ कॉम्पोनेंट कंपनी, तो वाल्व्स वगैरह वो सप्लाई करती है, सब सिस्टम सप्लाई करती है, या फिर एक प्लेटफॉर्म कंपनी, मतलब एक सबमरीन बना रही है या फिर एयरफोर्स का कोई जेट बना रही है. तो यू हैव टू क्लासीफाई दोज कंपनीज इन टू दीज ब्रैकेट्स इन दिस मेट्रिक्स, एंड सो देन यू कैन वैल्यू दोज कंपनीज प्रॉपरली. तो वो उसी लाइंस पे, उसी फॉर्मेट पे मैं ये कंपनीज को भी क्लासीफाई करूँगा, डिस्टिंग्विश करूँगा. बट एक और चीज़, व्हाट आई विल वन मोर थिंग इन विच यू कैन अप्रोच दिस सेक्टर इज कि जैसे यहाँ पे ब्रह्मोस इज द नंबर वन export product which we have right now, there are couple of other products as well which are getting exported, right? There is demand for a couple of other products. तो उसका value chain जब आप पढ़ोगे, then you will come across companies which are not very famous, right? So that is one way of approaching the defense sector, क्योंकि defense एक structural play है, and if you look at the companies as well, valuations काफ़ी ज़्यादा है defense में. तो defense exports पे मैं 2 मिनट बात कर लूँगा. 2014 पे ना इंडिया 70% जो equipments है वो import करता था. 2030 तक the target is 25, तो 25% external dependency रखनी है, 75% खुद बनाना है. तो this is one thing. Second thing जो है, defense एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ के है, एंड इसमें से 78% जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो यू वुड सी अ लॉट ऑफ माइक्रो कैप्स एंड स्मॉल कैप्स विच वुड कम इन दिस सेक्टर विच यू कैन ट्रैक एज यू गो अहेड, राइट? तो जैसे the 4 companies which I wanted to discuss out of Brahmos, one was जिंदल स्टेनलेस स्टील. तो हाँ, जिंदल का डिफेंस और एक एरोस्पेस का सब्सिडरी है विच इज़ मेकिंग लो अलॉय स्टील. सो ये एक मटीरियल्स कंपनी है. दिस इज सप्लाइंग मटीरियल्स, सो यू वैल्यू दिस एज अ मटीरियल्स कंपनी, नॉट अ सब सिस्टम और अ प्लेटफॉर्म और अ कॉम्पोनेंट कंपनी. तो जिंदल स्टेनलेस इज वन कंपनी. द सेकेंड कंपनी इज प्रीमियर एक्सप्लोजिव. ये रॉकेट मोटर्स बनाता है. तो दीज आर कॉम्पोनेंट्स विच गो इन टू द मिसाइल्स. तो यू वैल्यू दिस अगेंस्ट component companies. The third company is solar industries. ये subsystems बनाता है, propellant boosters बनाता है, and it is getting into drone and UAV and component manufacturing as well. तो backend integration कर रहा है solar industries. And finally it's data patterns, which is like the brain of the missile. तो ये पूरा electronics वगैरह जो भी है, that is something which data patterns is manufacturing. So there are 2 other exports which are coming up. तो एक तो आकाश 1S डिफेंस है. दिस इज अ 100% indigenous product, and this product has been sold to Armenia and Brazil. So you can probably look at companies which would benefit from the sale of Akash 1S defense. And the next product which is kind of again gaining a lot of traction is Swati weapon locating radar. तो ये Armenia को already बेच चुके हैं. I think the couple of months back the Prime Minister had visited Armenia. So Armenia and Greece are near to Turkey. So Turkey's stand on Pakistan is well known. So India is making its stand against Turkey well known by supplying all these important ammunitions to countries like Greece and Armenia. So Swati weapon locating radar is one
export which you need to kind of read, and the other is Akash, one is defense. So these are the two kind of export products which are catching up to Brahmos. So these are not stock recommendations. Please read more about these companies and these export products. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.